To the boundary, and has it stacking up because he's held on to this. थैंक यू मैडम रेशम, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। ये लोग हम इंजॉय कर रहे हैं। कोयटा जीत गया। कोयटा जीत गया, लाहौर हार गया। Amir got diagnosed with the form of leukemia which is called acute myeloid leukemia. Universally, acute myeloid leukemia is a difficult leukemia to treat. And even after getting acute myeloid leukemia, there are certain tests that we do that tell us that despite having AML, the child's chances of cure are decent. With Amir, that was not the case. When we diagnosed him, upfront we knew that he did not have the markers for low-risk AML. So upfront we knew that his case would be a challenging one. I think जो हमारी quality of life की टीम है जिसको डॉक्टर रेशम लीड करती हैं, and she spends a significant amount of time just hearing the family out, just talking to them independently and then talking to the patient as well. And what ends up happening is there is a certain comfort level that the family reaches where they feel like maybe, with the help of Dr. Resham and us, they have reached a point where yes, they can gently break the news to the child or talk to the child about the difficulties in the diagnosis and the treatment. So I think Dr. Resham has trained formally to alleviate suffering, to provide that extra level of support to the family. And I think she does a fantastic job of helping us in getting the family on board with these difficult conversations. चलेगा क्योंकि फिर हमारे पास करंट वाली नहीं है। मेमोरी मेकिंग और मेकिंग अ विश पॉसिबल, ताकि जो भी दिन है वो अच्छे गुजरें। आमिर के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कपल ऑफ वीक्स बिफोर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बिकॉज PSL वाज अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने कहा तुम्हारी टीम कौन सी फेवरेट है, तो उसने कहा कि कोयटा। आमिर से पूछने के बाद द ओनली पर्सन दैट केम टू माई माइंड वाज खालिद, जो हमारे साथ यहाँ काम करते हैं। उनको कहा कि भाई डालें, एंड आई एंड खालिद सेट टुगेदर एंड लुक्ड एट द स्केड्यूल फॉर द PSL कि व्हेन इज द अपकमिंग कोयटा's अपकमिंग मैच इन कराची, एंड वी फिगर्ड दैट इट वाज अ वीक लेटर। मुझे तो पता नहीं था टिकट कैसे बुक होती हैं, तो अपना ID कार्ड लेके बैठना पड़ा था, और क्रेडिट कार्ड वहाँ पे चल नहीं रहा था, वो वापस बाउंस बैक हो रहा था, एंड इट टुक अस 30 मिनट्स मुझे और खालिद को, एंड देन वी डिसाइडेड के इन पर्सन जाके लेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट खालिद वेंट द अदर डे 2 days आफ्टर एंड ब्रॉट द टिकट्स इन पर्सन। उनको ब्लड कैंसर है, तो उनके ब्लड के सेल कम होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है, और जो खून जमाने वाले ज़रात यानी प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। द थिंग दैट केम टू माई माइंड इज़ के उनको उससे पहले ये ट्रांसफ्यूज़ हो जाना चाहिए, ताकि जब ये वहाँ जाएँ तो ये अच्छा महसूस करें। आई रीच्ड आउट टू आमिर, and after asking about him and his condition, then we talked about transfusing the platelets a day before and getting a CBC done, and then there will be a surprise for you waiting, and I'll come and meet with you at the daycare. So तो फिर आमिर और उनके फादर ने कहा कि हम आए। ये देखो, अब देखो सही तरीके से। पेशेंट तानिया अजीज प्लीज कम टू द काउंटर। पसंद है आपको? फेवरेट? कोयटा का कैप्टन कौन है? कोयटा की टीम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है आपको? कोयटा की टीम में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? मोहम्मद। अच्छा, हम नाम मोहम्मद आमिर, जबरदस्त। यही रख दिया। अच्छा नाम है। बोलिंग PCH is down. Come to the counter. No. We presented him the tickets, and he was very, very excited seeing them, and he just opened them and saw both the tickets, and father was emotional, and but he was happy as well.
And yes, and I was very worried. And when the match was happening, I was constantly looking, watching the match and all, but I couldn't find him. But then I called. I never call parents directly because our connection with them is through the hotline. But because I was so impatient and all, I made a direct call, and I asked the dad that I hope आमिर ठीक ठाक हैं और खैरियत से वहाँ पहुँच गए हैं. So he was very excited. Said yes, yes, yes. वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं. और he was thankful and grateful, and he was doing okay. And so yes, that happened.